students. I hope you all have understood what is refraction. So now today I am with the next topic, refractive index. Okay. Students, refractive index depends upon the speed of light in the respective medium, and it is denoted by mu, and in some books it is denoted by n. Okay. See this is mu and this is n. So in some books it is denoted by mu and in some books it is denoted by n. Okay, now if we talk about speed of light, so we know in rarer medium, rarer means where density is very low, density kam hai means molecules or particles of that medium are far apart. So particles are far apart, so speed of light is fast in rarer medium. In denser medium, speed of light is slow और speed of light is less. Light की speed denser medium में कम होगी because in denser medium particles are very near to each other. Okay. So when light goes from one medium to another medium, density of light can be measured. We measure density of light. अब ये density of light है क्या? आप इसको कह सकते हैं refractive index of that medium. ठीक है? It is also known as optical density. आप लाइट की डेंसिटी को ऑप्टिकल डेंसिटी भी कह सकते हैं या इसे ऑप्टिक्स में भी स्टडी किया जाता है. ऑप्टिक्स मीन्स जहाँ पर आप पूरा लाइट के बारे में स्टडी करते हैं. सो नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. सो एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इंक्रीजेज, the speed in that medium decreases. Means the mediums in which speed of light is very low, the refractive index of that medium is very high. So as mu increases, v decreases. As mu decreases, speed of light increases. So this is the relation between refractive index and speed of light in medium. Mu is inversely proportional to 1 upon v. See students, many students not studied inversely proportional and directly proportional. They do not understand the meaning of inversely proportional. So what it indicates means if this quantity which is present in denominator, if this quantity increases, this quantity will decrease. If this quantity decreases, this quantity will increase. This is all about inversely proportional. Done. So now see, if this is the surface separating two medium, this is medium 1 and this is medium 2. Medium 1 is having refractive index mu1 and speed of light in this medium is v1. इस मीडियम में लाइट की स्पीड v1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम. In medium 2, speed of light is v2 and refractive index of this medium is mu2. So if we determine the ratio of refractive indexes of two medium, if we do mu2 upon mu1, so by this relation mu2 is inversely proportional to v2. तो mu2 अगर यहाँ न्यूमरेटर में है तो v2 यहाँ डिनोमिनेटर में प्रेजेंट होगा. सिमिलरली mu1 डिनोमिनेटर में है तो v1 कहाँ प्रेजेंट होगा? न्यूमरेटर में. सो mu2 अपॉन mu1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2. This is the relation between refractive indices of two media with the speed of light in two media. Okay. Now what is this? mu2 upon mu1 क्या है? It is refractive index of medium 2 with respect to medium 1. ध्यान दीजिएगा, mu2 we have written in numerator. न्यूमरेटर में आपने mu2 लिखा है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का आप शो कर रहे हैं? मीडियम
2. किस मीडियम के रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. सो इट कैन बी रिटन एज 1 म्यू 2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2. नोटेशंस ध्यान दीजिएगा बच्चों. This is also notation of refractive index of medium 2 with respect to medium 1, and this is also the notation of refractive index of medium 2 with respect to medium 1. Now see students, there is one numerical problem with respect to refractive index. If we are given the speed of light in air is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second, and speed of light in glass is 2 into 10 raised to the power 8 meter per second, and we have to calculate the refractive index of ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है. सो स्टूडेंट्स ध्यान देना, जिस मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसे आप ऊपर रखते हैं न्यूमरेटर में. सो म्यू जी अपॉन म्यू ए इज इक्वल टू, म्यू जी न्यूमरेटर में है तो स्पीड इन ग्लास कहाँ आएगी? डिनोमिनेटर में. ओके, सो म्यू जी अपॉन म्यू ए इक्वल टू वी ए अपॉन वी जी. So we put the value in this. VA is equal to 3 into 10 raised to the power 8 upon VG is 2 into 10 raised to the power 8. 10 raised to the power 8 cancelled out 10 raised to the power 8. On dividing 3 by 2 we get 1.5. So refractive index of glass with respect to air is 1.5. So this was one type of numerical. There are many types of numericals based on refractive index. Now come to the next topic, laws of refraction. There are two laws of refraction. Two laws. First one is, as first law of reflection was incident ray, normal and reflected ray all lie in the same plane. Similarly, this law is also same. Incident ray, refracted ray and normal all lie at same point. But what is the second law? सेकेंड लॉ क्या कहता है? देखिए, सेकेंड लॉ यहाँ पर रिलेटेड है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से. इन रिफ्लेक्शन द सेकेंड लॉ वाज एंगल I is equal to angle R. Angle of incidence and angle of reflection both are same, but here in phenomena of refraction you can see this is the surface separating two media. This is the incident ray. In this case this is refracted ray and R1 is angle of refraction. यहाँ देखिए I1 की वैल्यू के साथ R1 की वैल्यू कुछ आई. यहाँ हमने I2 चेंज किया. यहाँ I2 देखो I1 से बड़ा दिखाई दे रहा है तो R2 की वैल्यू भी कुछ चेंज हुई. इसी तरीके से I3 की वैल्यू आपने फिर से कुछ चेंज की तो R3 की वैल्यू भी कुछ चेंज हुई. बट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ angle of incidences to the sign of angle of refraction is always constant. Means sine of I upon sine of R is always constant. हमेशा constant रहेगा. ठीक है. So here angle of incidence is I1, angle of refraction is R1. So sine I1 upon sine R1, and these two medium are same. If first medium is air and this second medium is water, इन्हीं दोनों मीडियम्स के लिए आपने ये सेकंड वाला केस भी लिया है और इन्हीं दोनों मीडियम्स के लिए ये थर्ड केस भी लिया है. तो इस केस में क्या होगा? साइन I1 अपॉन साइन R1 किसके बराबर होगा? साइन I2 अपॉन साइन R2. इस वाले केस के लिए भी दोनों मीडियम सेम है तो इसके लिए भी साइन I3
अपॉन साइन R3। ये तीनों इक्वल होंगे और किसके बराबर होंगे, ये होगा कोई कांस्टेंट। ठीक है, सो if both the media are same, then sin I1 upon sin R1 is equal to sin I2 upon sin R2 is equal to sin I3 upon sin R3. All are equal and equal to कांस्टेंट, ये कोई ना कोई कांस्टेंट आपको देंगे। तो जो सेकंड लॉ है वो सेकंड लॉ जनरली बोलता क्या है, अगर हम इसको सीधे सीधे डिफाइन करें, सो the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always a constant. This one, ratio of sine of angle of incidence to ratio of sine of angle of refraction is constant. This is also known as Snell's law. Snell was a scientist who gave this law. That's why it is known as Snell's law. So many times it is asked by the name of this scientist.